The radius of a planet is r. A satellite revolves around it in a circle of radius r with angular velocity omega naught. The acceleration due to gravity on the planet surface is being given by your what relation? ये डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड का रिलेशन है. अगर आप लोग को मालूम होगा, when the planet and satellites have been revolving, gravitational force have been responsible for the rotation. तो अगर मैं इसको फोर्स लिख रहा हूँ तो इट इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय योर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर सर्कुलर मोशन में इट इज योर एम इंटू योर ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू योर आर. An acceleration due to gravity of your planet is represented by your capital G capital M divided by your r square. Yani I can write here right now G of your planet into your G into your M can be written as of your capital R square into your small m divided by your r square is equals to your m into your omega naught square into your r. तो ये m और ये m चले गया यहाँ पर से सीधा सीधा, ठीक है ना. तो ग्रेविटेशन ऑफ योर प्लैनेट कितना आ जाएगा बेटा, ये r स्क्वायर इधर चले जाएगा. तो इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये बन गया मुझे G ऑफ योर प्लैनेट, यहाँ लिख रहा हूँ देखो G ऑफ योर प्लैनेट इज इक्वल्स टू योर m चले गया तो दिस वन इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये r स्क्वायर इधर चले गया तो दिस विल बिकम फॉर मी r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब. सो कैपिटल R क्यूब ना कोई दिखा नहीं आंसर यहाँ पर. सो G इंटू R स्क्वायर है, क्यूब नहीं है सॉरी. सो R स्क्वायर है, आर स्क्वायर दोनों में है तो इट इज योर आर क्यूब ओमेगा नॉट स्क्वायर आर क्यूब ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर है फोर्थ ऑप्शन. Question number 24. The maximum particle speed of a traveling wave is v naught. Then this particle speed where the displacement is half the maximum value will be equal to your how much? Very important formula beta. He is asking the ratio of your v max divided by velocity of your particle. V max का फॉर्मूला क्या होता है बेटा SHM में, a इंटू योर ओमेगा. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. x की वैल्यू कितनी है बेटा, एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस यानी a ओमेगा बाय योर 4 हाफ ऑफ योर मैक्सिमम वैल्यू. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ योर मैक्सिमम मतलब a स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 4. तो ये हो गया मेरे पास v max is represented by your v naught divided by v is equals to your a divided by this will become for me root 3 divided by 2 into your a और ये भी चले गए यहाँ से. तो I can write the value of your v is equals to your root 3 divided by 2 into your v naught यानी थर्ड ऑप्शन. गुड क्वेश्चन बेटा, एक बार आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 25. A string of length 1 meter and mass per unit length 0.001 kg per meter is hanging vertically as shown. A small pulse has been generated its lower end. The pulse reaches the top end. तो यहाँ पर से एक पल्स क्रिएट हुई, ऐसा क्रिएट होके ऐसा ऊपर तक जा रही है बेसिकली. तो वहां तक जाने के लिए टाइम कितना होगा. Velocity of a string is given by the formula v is equals to under root of your t divided by your mu. So tension at any point अगर मैं ले रहा हूँ बेसिकली इसमें, तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा एलिमेंट, इसके ऊपर टेंशन कितना हो जाएगा. इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ले रहा हूँ यहाँ पर. एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू योर टी, और ऊपर भी टेंशन स्ट्रिंग में टी हो जाएगा. और इसका विड्थ मान के चलो यहाँ से यहाँ तक हो गया x. तो इसमें टेंशन जो लिखेंगे अपन t इज इक्वल्स टू योर म्यू इंटू योर x है कि नहीं, म्यू इंटू योर x इंटू योर g. टेंशन आया कैसा बेटा, t इज इक्वल्स टू योर dm इंटू योर g से. dm मतलब कटेड मास बाय योर ओरिजिनल मास इज इक्वल्स टू योर कटेड लेंथ डिवाइडेड बाय योर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना. सो वैल्यू ऑफ म्यू विल बी कटेड लेंथ कितना मान के चलो यहाँ से यहाँ तक मैंने x के पार्ट पे लिया हुआ है. तो कटेड मास मतलब dm विल बी इक्वल टू योर m. लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज m एंड जनरेटेड पार्ट ऑफ दिस वन. सो dm की वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं. So t is equals to your dm की वैल्यू हो गई m into your dx is nothing but x, l is nothing but 1, isn't it. ये हो गया मेरे पास l. So m by l is can be written as of your mu. So it is mu into your x. तो ये हो गया mu into your x into your g. तो ये हो गया टेंशन, ऐसा आ गया मेरे को. तो v की वैल्यू निकालो, v is equals to under root of your t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x by over 100 divided by this one is 1 by 1000. So that will be coming as root of your 10 times of your x. So velocity will be equal to dx by your dt. That will be equal to root to 10 into your x, isn't it. अपने को टाइम निकालना है, सिर्फ आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए टाइम को निकाल के.
तो अगर टाइम इधर चले जाएगा तो दिस विल बिकम फॉर मी dx डिवाइडेड बाय √10 into √x is equals to your dt. इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रल ऑफ dt will be equal to t. So √10 will also will become out. So √10 आना चाहिए, तो सभी में √10 आ रहा. If this will be x power 1/2, तो ये बन गया x power of -1/2 into your dx divided by 1/√10. इंटीग्रल ऑफ dt is nothing but t. इंटीग्रेशन मालूम है आपको, x to the power of n into your dx will be equal to your n into your x n minus 1. यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल ऑफ x to the power of n into dx is equal to how much for me, n into your x plus of your 1 divided by your n plus 1, sorry. So integral of your x to the power of n into dx will be equal to how much beta, x to the power of your n plus 1 divided by your n plus 1. तो ये हो गया -1/2 plus 1 divided by -1/2 plus 10. यानी आ जाएगा मेरे पास 2. So it is 2 by your √10 seconds. Third option. The next one is question number 26. The energy of ionization of hydrogen atom is EH. What is the energy of your ionization of doubly ionized lithium will be equal to how much? Direct question है. Ionization energy का अगर अपने को फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, ionization energy is represented by E. अपने को एक्चुअल एनर्जी होती है माइनस निकाल दो यहाँ पर, तो 13.6 into z square. This represents me the ionization energy. So ionization energy of your hydrogen will be equal to your how much for me, 13.6 electron volt. उसी तरह से ionization energy for your lithium 2+ will be equal to 13.6 into your atomic number is 3 square. तो ये वैल्यू आ रही है अपने को 9 times of your EH. Second option, direct question था. Question number 27. A radioactive sample decays by 63% of its initial values nearly 10 seconds. It would have decayed by 50% of its initial value in approximately how much time? देखो lambda is known as of what beta, 1/time half of time period decay constant. So lambda की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा right now, 10 seconds. Radioactivity's initial value is nearly for me how much, 10 seconds. यानी t half value if I am writing, that will be equal to 0.693 divided by lambda. यानी that is 0.693 divided by lambda is nothing but 1/10. तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, approximately will be getting the answer. So t half seconds will be equal to your 7 seconds तक कुछ आ जाएगा बेसिकली. थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन. ये हो गया इसमें और इसमें हो गया. क्वेश्चन नंबर 32 इज योर ऑप्टिक्स और क्वेश्चन. अगर किसी को याद है तो मेरे को फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से. A beam of a light consisting of two wavelengths, 7000 angstrom, 5600 angstrom A, is used to obtain the interference pattern. Okay, in VDS, the distance between the slits is 1 mm and the distance of the screen from the slit is 120 centimeter. What is the least distance from the central maxima where the bright due to both the wavelengths are been coinciding? अच्छा, both of them are अगर coincide कर रहे हैं तो what is the condition for me बेटा? N1 lambda 1 will be equal to your N2 into your lambda. ठीक है ना? तो n1 by n2 कितना आया बेटा, n1 divided by n2 will be equal to lambda 2 divided by lambda 1. यानी this will be equal to 5600 divided by your 7000. ये वाला चले गया, so this will be equal to 4/5. So distance of the central maxima will be equal to how much? यानी इसमें से n1 की वैल्यू हो गई 4 और n2 की वैल्यू हो गई 5. यानी डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम मतलब y is equals to your n1 into lambda 1 into capital D divided by small d. n1 की वैल्यू है 4, wavelength of the first one is right now for me 7000 angstrom into 10 to the power of -10 into capital D is given as 120 centimeter, 120 into 10 to the power of -2 divided by small d. Small d is equals to over how much for me the problem, 1 mm यानी 10 to the power of -3. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will be giving me the answer. ठीक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, सिर्फ 3 मिनट ही बचा है. आप लोग इसको एक बार कर लीजिए बेटा, दैट विल बी गिविंग मी द आंसर. आंसर इसका आना चाहिए थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 33 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आप लोग ट्राई कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए बेटा. स्टील रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज फिक्स्ड बिटवीन 2 रिजिड्स. यानी ऐसा 2 रिजिड्स के बीच में एक स्टील रॉड को फिक्स कर दिया गया हो. इसका लेंथ दे रखा है मेरे को 2 meters. Heated from a temperature of over 50 to 100, यानी delta theta will be equal to 50. Stress developed in the rod is equals to how much? Longitudinal stress will be equal to how much? Direct formula याद है आप लोग को इसका? Rod is been fixed between the two rigids. Thermal strain will be equal to your stress.
यानी अल्फा इंटू डेल्टा टी. Stress developed in the rod is nothing but equal to your how much? Stress will be equal to your strain. Strain मतलब change in length by original length. Change in length by original length मतलब alpha is equals to delta L by L into delta theta. So alpha into delta theta will be equal to delta L by your L. तो ये हो गया मेरे पास alpha into delta theta. तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखा है 12 into 10 to the power of -6 into temperature difference is nothing but equal to 50. यानी 12 5 is 60, that is 600 into 10 to the power of -6, so that will be equal to 6 into 10 to the power of -4. Stress developed in the rod is equals to अच्छा वैल्यूज नहीं दिया. टेंसिल कंप्रेसिव शियर 0 टेंसिल हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी कर लीजिए बेटा, 1 मिनट से कम टाइम है मेरे पास. क्वेश्चन नंबर 36 गुड क्वेश्चन, very very good question. The energy of damped oscillator as a function of the time is given as of a square exponential to the power of minus alpha into t, where alpha value is 0.1 second inverse. Measurement of E has an error of 1%, measurement of time 2%, maximum percentage error in the E at t is equals to 2 seconds will be equal to how much? Okay, एनर्जी दे रखा है बेटा, इसको हमें एरर्स में लिखना है तो मुझे लॉग लेना चाहिए बेसिकली. सो इफ आई टेक द लॉग तो इसका लॉग कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बिकम फॉर मी ln of your E at a time of your some time t. That will be equal to your another part of relation, that is nothing but 2 into your ln of your A minus that will be your 0.1 into your A. ठीक है ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू दे रखा है 0.1 सेकंड इनवर्स तो आई एम टेकिंग दैट वन एज t, टेकिंग द log on both the sides right now, so I am getting this relation. इसमें से अल्फा की वैल्यू डाल दिए तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए बेटा.